So question number one, with the help of diagrams, explain and compare the movement along and the shift of the demand curve. Now, this question, they've never ever given this first part of this question. कभी भी नहीं दिया है इन्होंने. And that's weird because we've been teaching this for quite some time. In fact, day one से हम जब से econ पढ़ा रहे हैं, we've been talking about this. The idea that demand curve, aggregate demand curve, not just demand curve but aggregate demand curve के अंदर जो है आपकी दो किस्म की सिचुएशंस होती हैं. एक हमारी सिचुएशन होती है जिसको हम मूवमेंट अलोंग द कर्व कहते हैं, और दूसरी होती है जिसमें हम शिफ्ट की बात करते हैं. तो if you take a look at this, if you remember, we used to say aggregate demand is C plus I plus G plus X minus M, suggesting that if the current price level is this, again, from the CI's point of view, let's do this. When we're writing, let's not write price over here, let's write price level, because again, ये हमने कहाँ पे देखा है? ये हमने देखा है in one of the marking scheme के price नहीं accept करोगे, price level accept करोगे, और यहाँ real GDP, real output, real income, all of that would work. ठीक है, जो diagrams है उसके अंदर क्या क्या है? If the price level is this, then the real income is this, ये real output is this. तो एक डायग्राम ये हो जाएगा. पहले डायग्राम के अंदर जो है they're talking about compare the movement with the shift. तो जहां तक मूवमेंट की बात है, वी स्पोकन अबाउट दिस बिफोर ऑल्सो, कि देखें जी, इफ प्राइस लेवल फॉल्स डाउन, व्हाट डू वी सी? प्राइस लेवल अगर नीचे गिरती है तो एग्रीगेट डिमांड के नंबर्स बढ़ जाते हैं. व्हाई डज दैट हैपन? Well, it happens because of the three impacts that price level does. Whenever price level falls down, three effects take place. Number one, the income या wealth effect. ये क्या होती है? Income या wealth effect, that when price level goes down, the purchasing power of people goes up, and as a result, they're able to consume more. Their in businesses are able to invest more. ठीक है? In briefly, I'm just telling you this. Notes वगैरह में हमने plentiful बात की हुई है इसके ऊपर. Secondly, you have the substitution effect. Substitution effect क्या होता है? That when the price level falls down, your export increases, your import falls. This is part of CIGX minus M. Overall aggregate demand के numbers go up, right? तो पहले केस के अंदर भी जब C और I increase हुआ था तो aggregate demand number goes up. Second केस के अंदर भी ऐसे ही होगा. And third and the last effect that takes place is what we call an interest rate effect, which talks about that how cost of borrowing because of lower prices, the interest rate, oh, sorry, my bad. Because of the price fall, the interest rate also falls. अब इसके पीछे reason क्या है? That when price level falls down, the demand for money goes down, right? So if I was to explain कि जी ये कैसे हो रहा है, so what we say is the interest rate effect is that if price level goes down, then the demand for money goes down, and as a result, the interest rate goes down. ठीक है? और जब interest rate कम हो जाएगा, तो cost of borrowing goes down, and the borrowing increases, right? The chain effect. And then the consumption increases, investment increases, and as a result, the aggregate demand increases. ये सारी movement की बात हो रही है. This is not about the shift. This is all about the movement. Let me write over there. This is all about the movement along the curve. And I've shown the diagram over here.
Acha, when you're starting the question, of course, I think there are two things that you should define. Just put it out there that you know this stuff. एक aggregate demand क्या होता है? Right? So you should start by define aggregate demand and aggregate demand curve. I've told you plenty of times that demand or demand curve, they're two different things. Aggregate demand is the total output produced in the economy, which is shown by the formula CIGX minus M. An aggregate demand curve shows the inverse relationship between the price level and the real GDP, right? Yes, हमारा aggregate demand curve है. But again, the main question is about diagram. I think ऐसी situation में when they write diagram with S, right? और ये वो ब्रैकेट में S नहीं है, तो I think दो diagrams की requirement होनी चाहिए. But we've hardly seen कि उन्होंने दो diagram की मार्किंग कोई बहुत सिग्निफिकेंटली कोई मार्क्स ज्यादा दे रहे हो या कुछ आई डोंट सी. लेकिन प्लूरल में है तो बना लो दो डायग्राम, एक मूवमेंट का बना लो और एक शिफ्ट का. ऐसे अगर डायग्राम लिखा है या डायग्राम ब्रैकेट एस लिखा है तो एक ही में दोनों चीजें दिखा दो, ठीक है. दिस वन इज ए शिफ्ट, राइट. अब जब शिफ्ट हुआ है तो शिफ्ट के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, राइट. तो शिफ्ट के पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं? बहुत सारे रीजन है, बट इन शॉर्ट बेसिकली एनीथिंग विच कॉजेज सी आई जी एक्स या एम टू फॉल, ठीक है. सी के रीजन मेरे ख्याल के अंदर तो अच्छे रीजन जो होते हैं ना, जो मल्टी इन चीजों को लगते हैं. एक है इंटरेस्ट रेट का गिर जाना. Because have they talked about rise or fall? What are they talking about? No, nothing. कोई भी increase decrease दोनों तरफ की shift. Again, interest rate गिरेगा, cost of borrowing गिरेगी, borrowing ज्यादा होगी, consumption increase होगा, investment increase होगा, AD में shift आएगा. Or direct taxes is also you can work with. Direct taxes कम हो जाएंगे तो again लोगों की disposable income बढ़ जाएगी, राइट. उसकी वजह से कंजम्पशन में इंक्रीज आएगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज आएंगी और एडी बढ़ेगा. सिंपल एज दैट, देयर इज नथिंग मोर टू इट. आराम से इस तरीके से तुम डील कर सकते हो इस क्वेश्चन से. इट्स अ मच मोर सिंपलर इन टर्म्स ऑफ दिस. बाय द वे, द प्रॉब्लम विद दिस इज, sorry, I haven't made the comparison but instantly मेरे दिमाग में आया that where is the AO1, AO2, AO3 की information. So AO1 के अंदर these diagrams will be sufficient. AO2 के अंदर the explanation of the diagrams, the shifts and all, shift और movements के पीछे जो explanation है. And lastly, evaluation के अंदर compare the movement and a shift of the AD curve. Basically, if I have to make a comparison, my make comparison is that movement versus shift के अंदर movement along the curve occurs due to change in price level. Okay. If अच्छा, a comparison, and shift occurs due to non-price factors. एक डिफरेंस ये हो गया. एक कंपैरिजन क्या हो गया कि मूवमेंट अलोंग द कर्व का, that if price level rises, then there is an upward movement along the curve. And then दूसरी बात complete करना कि if there is a fall in the price, then this is what's gonna happen. Sorry. And shift के अंदर क्या करोगे? If factor like income rises,
then aggregate demand curve will shift to the right. So basically, I'm sort of like explaining two things for the evaluative purpose. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कोई खास अच्छी इवैल्यूएशन उस तरीके से द वे वी बीन डीलिंग विद कि वो हमेशा कहते हैं कि एंड कंसिडर ब्ला ब्ला ब्ला, तो फिर वो वाली चीज इसमें है नहीं। तो कंपैरिजन के लिए दिस इज हाउ आई मेक माय कंपैरिजन कि उसमें ऐसे हो रहा है तो इसके अंदर ऐसे हो रहा है। ठीक हो गया। Now let's take a look at part B of this. Discussed whether an increase in aggregate demand leads to a rise in output and employment. This is a very, very typical question. जहाँ तक इस question की बात है, let me just very quickly um, skim through this particular question कि इसकी क्या requirement होनी चाहिए तुम्हारी। But again, this is one of those questions जो मैं बहुत बहुत दफा करा चुका हूँ। ठीक है। So let me very quickly go over this. Discuss whether an increase in aggregate demand will always, obviously मेरी evaluation क्या हो रही है कि AD के increase होने से क्या हमेशा output और employment में increase आएगा। I'm sure some of you might have a question कि क्या इसमें हम diagram बनाएंगे। बना सकते हो, बड़ा अच्छा सपोर्टिंग रोल हो सकता है उस डायग्राम का। बिकॉज पहले पार्ट के अंदर तो तुम एडी वगैरह समझा चुके हो। व्हाट यू शुड बी डूइंग इन दिस वन इज यू कैन give two reasons or one or two reasons for AD to increase। ये कर लो पहले तो। ठीक हो गया। और उसकी वजह से क्या आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज आएगा। आई थिंक इसमें एक अच्छा सा डायग्राम, इसमें डायग्राम जैसे बन सकते हैं। इनफैक्ट यही क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ना, ये 8 मार्क में भी आ सकता है और कंसिडर का पार्ट इसमें ज्यादा बेहतर सूट करेगा। एंड कंसिडर वेदर द whether a shift will always increase output and employment somewhere along that line। इसके अंदर हम दो डायग्राम की बात कर सकते हैं, AO1 और AO2 की। जहां तक बात है उसमें तुमने AD का रीजन दिया, AD को राइटवर्ड शिफ्ट किया। AD जब राइट पे शिफ्ट होगा तो यू कैन सी प्राइस बढ़ रही है और आउटपुट लेवल्स बढ़ रहे हैं। ये तुम्हारा डायग्राम है। मेन तुम्हारे आंसर के अंदर क्या होगा कि एडी बढ़ने की वजह से एडी से AD1, as we can see the real output has increased from YO to Y1, and it also shows uh, there has been a rise in output। Along with that, जब ये increase हुआ है, you can see an increasing movement along the curve of the aggregate supply curve। उसके अंदर ये जो मूवमेंट है, उसके अंदर आउटपुट जो इंक्रीज हुआ है, इस आउटपुट इंक्रीज के साथ व्हाट वी ऑब्जर्व इज कि यस, एम्प्लॉयमेंट हैज आल्सो इंक्रीज। ये दोनों, ये प्राइसेस के बारे में तो सवाल ही नहीं है, राइट। इट्स नॉट अबाउट दैट। सो एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी राइज की है। नाउ दे आर आस्किंग यू एडी के इंक्रीज होने से क्या आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट हमेशा इंक्रीज होगी। For this one, I'm more thinking about the LRAS, the curve which goes like this। ये हमारा बड़ा फेवरेट है ये वाला कर्व, LRAS का evaluations के लिए खास तौर पे। ये will it always lead to। So our discussion for evaluation in this one is that if aggregate demand is increasing at the perfectly elastic part, then what we observe is कि आउटपुट के अंदर जो इंक्रीज है वो क्वाइट सिग्निफिकेंट है, और एम्प्लॉयमेंट में जो इंक्रीज है वो भी काफी सिग्निफिकेंट है। ठीक है। However, if aggregate demand is increasing from here to here, तो क्लियरली लेबल्स अपने रखना खास। उसके अंदर इकोनॉमी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल्स के ऊपर थी और एडी आप बढ़ा दोगे
तो कोई इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर इंक्रीज, सॉरी, एम्प्लॉयमेंट में तो कोई इंक्रीज नहीं आएगा, रियल आउटपुट पे भी कोई इंक्रीज नहीं आएगा, लेकिन नॉमिनल जीडीपी जरूर बढ़ जाएगी। तो आई थिंक वो वाला पॉइंट जो मैंने अभी बोला है उसको इग्नोर भी कर सकते हो, पर जो समझदार हो तुम फौरन से समझ जाओगे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। when you do price, ये वाली price level into that much output, P into Y will give you a certain level of GDP। और फिर जब AD राइट पे गया और प्राइस लेवल्स बढ़ गई, तो क्या होगा, नई प्राइस लेवल्स के साथ, P1 की प्राइस लेवल्स के साथ जो रियल आउटपुट है उसको जब तुम देखोगे तो फिर टर्न्स आउट कि योर जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी विल एक्चुअली बी राइजिंग। रियल में कोई फर्क नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में कोई फर्क नहीं है। ये यहाँ अगर तुम्हें याद हो हम क्या लिखते थे, रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी इज नॉट चेंजिंग, बट नॉमिनल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी रीजंस might go up. I don't think इस क्वेश्चन के अंदर वो टेक्निकलिटी might be required, but this is how this question can be done simply. Yeah, this is because the resources are fully utilized and you're at potential, so there is no way to increase employment. अच्छा, और भी बातें कर सकते हो, that will it always lead to real output? भाई देखो, एडी इंक्रीज हो रहा है और एग्रीगेट सप्लाई अगर कम हो जाए, राइट, यहाँ पे जैसे पहला डायग्राम देखो, एडी इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, लेकिन अगर एग्रीगेट सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाए बिकॉज ऑफ द राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी, तो देन रियल आउटपुट माइट रिमेन द सेम। maybe it might even fall if aggregate supply के अंदर fall is much more bigger, right? Evaluation is what, will it always? So we're saying no, it will not always. It's up to you. You want to take the LRAS नीचे वाला ये वाला route, or you want to come up with यहाँ के aggregate supply की shifting to the left वाला route. It's up to you. Both are perfectly fine. That is what your evaluation is. As long as you're answering कि will it always or not, तो फिर हमारा आंसर इस तरह से स्ट्रक्चर हो सकता है। Okay, moving on. Let me try another one here. Let's see ये वाला क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है। Now again, this is also one of those questions that they've never given in the past historically, लेकिन context to your year बिल्कुल बनता है, इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं बनता। तो लिखते हैं, explain the difference between growth in nominal and real GDP and consider the uses of both। नॉमिनल किस लिए यूज होता है और रियल जीडीपी किस लिए यूज होता है, ठीक है। तो व्हेन ऑब्वियसली वी आर एक्सप्लेनिंग दीज टर्म्स फॉर AO1 नॉमिनल की जहां तक बात हो रही है, तो वी नीड टू रिमेंबर कि देखो जी, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, अ फ्यू स्टैंडर्ड वर्ड्स दैट यू हैव टू यूज फॉर इट, दैट वी से कि इट इज नॉट adjusted for inflation, ठीक है। या फिर जब ये कैलकुलेट करते हो तो ये करंट डॉलर प्राइसेस के ऊपर होता है, क्योंकि करंट डॉलर प्राइसेस के अंदर इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस ऊपर गई है, तो इट विल टेक दैट इनटू अकाउंट, ठीक है। ये जो होता है ये ज्यादातर इस तरह से मॉनेटरी टर्म्स के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी जो है उसके लिए हम लिखते हैं दैट इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। अदर देन दैट वी से कि ये कांस्टेंट डॉलर के ऊपर चलता है, कांस्टेंट डॉलर प्राइसेस के ऊपर चलता है। इफ यू सी वन ऑफ माय लेक्चर्स ऑन दिस, उसमें मैंने सही से क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि कांस्टेंट क्या होता है, कि आप एक बेस ईयर लेते हो और बेस, आज अगर बेस ईयर मेरा 2010 था और आज मैं 2024 में बैठा हूं, तो 2000 की प्राइस जो थी, 2010 की प्राइसेस वो तो बहुत कम थी, राइट।
आज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन उस प्रोडक्ट की प्राइसेस तो काफी गुना बढ़ गई है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मैं जीडीपी निकालने के लिए प्राइस इनटू क्वांटिटी कर रहा होता हूँ, तो मैं आज की क्वांटिटी देखता हूँ और बेस ईयर की प्राइसेस को लेता हूँ, ताकि ये जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाए। I've done a very extensive lecture on it. Please, you can go and you can see on the YouTube playlist. And finally, this is actually looking at the purchasing power. ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन होती है। देर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट नॉमिनल वर्सेस रियल। अगर तुम चाहो तो मैं अभी तुमको बता देता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मुझे रियल जीडीपी निकालनी है, तो मैं मार्केट में से जो नॉमिनल जीडीपी निकली हुई है, जो आज की प्राइसेस से हमने निकाली है, क्योंकि यूजुअली गवर्नमेंट यही करती है कि आज गाड़ी की क्या प्राइस है, कितनी क्वांटिटी बिकी, टोटल कर लो। आज राइस की क्या प्राइस है, कितनी क्वांटिटी बिकी, टोटल कर लो। ऐसे हर चीज की प्राइस इनटू क्वांटिटी आज की करंट प्राइस के ऊपर हम लेके तो टोटल करते हैं, तो एक अच्छा सा नॉमिनल जीडीपी का नंबर निकल आता है, विच इज ऑल मॉनेटरी, which is all on current prices, which is all not adjusted for inflation. Adjusted for inflation के लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का टर्म यूज करते हैं। डिफ्लेटर टर्म क्या होता है कि आपका जो बेस ईयर का इंडेक्स होता है, आई एम श्योर इन्फ्लेशन में तुमको याद है, आगे फिर बात होगी, बेस ईयर इंडेक्स इज 100, और अभी करंट ईयर का इंडेक्स क्या चल रहा है जो इन्फ्लेशन के साथ होता है, उससे डिवाइड करते हो, तो ये फॉर्मूला नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट कर देता है रियल में, एंड देन यू कंपेयर। ठीक है, सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दैम। आई हैव एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन दैम। New minus will not work. That's a completely different. That's economic growth का formula कि पिछले साल से इस साल में कितनी economic growth आई है, changes in different GDP. So new minus rule does not apply over here. Okay, जी. Now let's consider the uses. Nominal GDP और real GDP के क्या uses हैं? देखो जी, नॉर्मली होता क्या है कि नॉमिनल जीडीपी जो है वो तुम्हारी कोई भी गवर्नमेंट जो रेगुलर यूज करती है, आप यूज करते हो कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। ठीक है, और कंट्री का ट्रेंड और डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में इकोनॉमी मूव कर रही है। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट यूज कर सकती है नेशनल मिनिमम वेज सेट करने के लिए। गवर्नमेंट सेट कर सकती है टैक्सेस वगैरह, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर कि किस तरह से इनकम जीडीपी बढ़ रही है वगैरह। जहां तक फॉरेनर्स की बात है, फॉरेनर्स अगेन कंट्री की प्रोग्रेस देख के इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ रिपोर्ट कार्ड। ठीक है जी, जीडीपी जो है इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ रिपोर्ट कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट कि कंट्री की क्या सिचुएशन है, क्या मार्क्स आ रहे हैं। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ है, वर्सनिंग की तरफ है, तो उससे फॉरेनर भी देख के उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी करेगा। गवर्नमेंट भी देखेगी कि हमें कितनी सब्सिडी और देने की ज़रूरत है, हमें कितनी एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट भी अपनी प्लानिंग देखेगी बेसिकली उस केस के अंदर, कंट्री कैसी प्रोग्रेस कर रही है। और फिर खास तौर के ऊपर जब रियल की हम बात करते हैं, तो दैट शोज द ट्रू पिक्चर इन माय ओपिनियन। वैसे तो मैं ये सिर्फ और सिर्फ जैसे इसने बोला ना कि ये एंड कंसिडर द यूजेस ऑफ बोथ, आई एम नॉट गोना सेपरेट द यूजेस, आई एम जस्ट गोना से कि जीडीपी के यूजेस क्या है। ठीक है, नॉट ओनली दैट, लेकिन जब तुम रियल जीडीपी निकालते हो तो यू आर टेकिंग आउट इन टर्म्स ऑफ CIGX-M। तो यू कैन लुक एट के हर कंपोनेंट के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। इफ यू आर अ वेरी हाई ओपन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन
की तरफ आपका देखना चाहते हैं हम कि आपका मुल्क ग्लोबलाइजेशन से कितना इम्पैक्टेड है, तो बेसिकली देन व्हाट यू लुकिंग एट इज एक्स माइनस एम कंपेयर टू द होल जीडीपी आपका कैसा है। द हायर द एक्स माइनस एम की वैल्यू of the total GDP, the greater the percentage it entails, the more open the economy is, more globalized you are. ठीक है? The more bigger the number of G over here, that shows there is a lot of government involvement in the government. ठीक है? This is national minimum wage. So these are all like from the government's perspective. ठीक है? This is just general perspective कि एवरीवन कैन सी कि मुल्क का क्या सिचुएशन है। लाइक फॉर एग्जांपल डे वन से मैं तुम लोगों को जीडीपी याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्फ्लेशन के नंबर्स, इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, वी बीन टॉकिंग अबाउट करंट अकाउंट एंड ऑल दीज थिंग्स, डॉलर की क्या वैल्यू है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट because everybody in general terms want to see how things are going because your consumption, your savings, your investment, foreigners investment, all of these things come into play over here. ठीक है? फिर once I've considered the uses for my AO3, AO2 के marks, then I want to see and I must talk about कि nominal versus real के अंदर जो है real GDP shows truer picture of the country's standard of living because it shows the purchasing power of the population. ठीक है? Rise in nominal can be misleading as it can rise due to inflation. Okay? लेकिन real के साथ problem क्या है? So I want to counter my idea also. Real is more difficult to calculate and may not be statistically reliable. All right. So, in conclusion, real GDP. Uh, yeah. GDP per capita, real GDP per capita, shows standard of living. Definitely, it shows standard of living. Um, बल्कि इनफैक्ट यूर राइट, इसको यहाँ पे दैट वुड बी इवन अ बेटर थिंग टू कि रियल जीडीपी को जब आप रियल जीडीपी पर कैपिटा बनाते हो तो दैट इज अ बेटर वन टू डू। नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा जो है दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइक मतलब जस्ट टू शो दैट रियल जीडीपी के साथ थिंग्स आर अ लिटिल मोर रिलायबल। या फिर अगर आपको कंट्री की बात करनी है, अगर मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं लेकिन एक कंट्रीज के अंदर लोगों की इनकम और कंट्री की प्रोग्रेस ही बात कर रहे हो, तो नॉमिनल जीडीपी से बेहतर रियल जीडीपी बेसिकली बताता है। ठीक है, बट दैट्स अ गुड पॉइंट कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो एक्चुअली जीडीपी पर कैपिटा दिखाता है, सिर्फ जीडीपी इज नॉट अ गुड मेजर। इट इज अ मेजर बट इट्स नॉट अ गुड वन। जीडीपी पर कैपिटा इज अ बेटर मेजर विच यू शुड बी यूजिंग एज डिस्कस्ड इन ऑल। Okay जी, so we spent a little too much time on that one। भाई ये वाला क्वेश्चन अगेन A2 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुके हैं, AS के अंदर नहीं, लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अब तुम्हारे को उठा के इन्होंने दे दिया है तो you should know how to answer this question as well। So they're saying कि discuss करें, what do you want to discuss? Discuss whether the benefits of economic growth always outweighs the cost।
Evaluation क्या है? I have to be very clear. क्या economic growth always outweighs the cost? इकोनॉमिक ग्रोथ को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है? क्या क्या चीजें होनी चाहिए तुम्हारी इकोनॉमिक ग्रोथ? द मोमेंट यू हियर इकोनॉमिक ग्रोथ, you must know that we're talking about either the actual or the potential. One talks about rise in output produced. One is talking about productive capacity, what you can produce. आपका बच्चा बड़ा होशियार है लेकिन पढ़ता नहीं है. Do you understand? Potential है लेकिन अचीव नहीं कर रहा. They're two different things. This is sort of like PPC का point inside moving towards the line. That's actual PPC की जो line है, that's shifting outwards. That is potential. यहाँ पे क्या हो रहा है? Actual is a short run concept, and it occurs if aggregate demand increases. That would be the reason behind it. Potential is more on the long run side, and this usually occurs when your LRAS increases. So I've sort of like suggested certain reasons for it also. So AO1 के लिए from defining के लिए this is what you can use. If you want तुम economic growth rate को भी define कर सकते हो. What is the economic growth rate? One second. Economic growth rate is when you had your formula, which was talking about the new GDP minus the old GDP divided by the old GDP into 100. ये असल में एक्चुअल जीडीपी का वो है तरीका कि पिछले साल क्या थी, इस साल क्या थी, एंड देन यू मेजर इट अकॉर्डिंगली. ये एक्चुअल के बारे में है. बट रिमेंबर द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट दिस. The question is about the benefits and the cost of economic growth. ठीक है? तो you're not going to list them down, but you're going to very nicely, in good paragraphs and sentences, you're going to explain the benefits of economic growth. ठीक है? Clearly, what we're suggesting is if there is economic growth, there is an increase in output, there is increase in income, there is increase in the purchasing power of the people, and obviously, the more goods and services they can consume, the improved standard of living they are going to have. That's a good train of thought. ठीक है? Other could be economic growth rate होगी तो अच्छे से एक्सपोर्ट करोगे. पॉसिबल है कि इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएगा, करंट अकाउंट भी अच्छा हो जाएगा, फॉरेन रिजर्व्स भी आएंगे और कंट्री भी स्ट्रॉन्ग करेंसी हो जाएगी. गुड. ये भी अच्छा स्ट्रीम ऑफ थॉट है. उसके अलावा क्या स्ट्रीम ऑफ थॉट लेके चल सकते हैं? उसके अलावा यू माइट वांट टू सजेस्ट समथिंग लाइक कि देखें जी, जब जीडीपी के नंबर्स इंप्रूव करेंगे तो फॉरेनर्स देखेंगे, फॉरेनर्स विल फाइंड country to be attractive for FDI, right? And then obviously FDI के आने की वजह से, इन्वेस्टमेंट्स आने की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो होगी. या एब्सोल्युटली आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है. You connect this whole thing to employment, you connect it to your macroeconomic objectives, and you say, वाह क्या बात है, economic growth, so it's all good. However, the costs of economic growth, we talk about certain costs also.
कॉस्ट के अंदर ऑब्वियसली हम स्पिल ओवर की बात करते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज की बात करते हैं, पोल्यूशन, एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, जो अनसस्टेनेबिलिटी की बात करता है, अनसस्टेनेबिलिटी वर्ड, अनसस्टेनेबिलिटी की बात करता है। एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, खास तौर पे अगर इट्स ड्रिवन एक्सप्लॉयटेशन, इफ इट्स खास तौर पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज, तो थोड़ा बहुत ये बताया, अच्छे मार्क्स मिल गए। आई थिंक द यू क्वालिफाई फॉर L3 आंसर्स ओवर हियर, so that's fine. Imported inflation, how does that fit in? You suggest how imported inflation is going to fit in over here. But then, does it? Questionnaire, discuss whether the benefits of economic growth always outweighs the cost. So what you want to see is, yes, yes, definitely. One of the costs is inflation, demandful inflation, right? Demandful inflation. Massive inflation, it will lead to inflation. People will have issues with that. Um, okay, so there's one thing. So there's a suggestion that economic growth will lead to a rise in income. ठीक बात है. When income rises, consumers will import goods leading of higher quality. बिल्कुल ठीक बात है. इससे मैं फौरन पहले सोचता हूँ कि मैंने import की बात की है, x minus m and whatever connects to x minus m. If import is rising, then x minus m will cause AD to fall. That is anti-inflation situation. Okay? दूसरी तरफ जब बाहर से आप इंपोर्ट कर रहे हो, तो इफ यू थिंकिंग कि ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, तो द आइडिया ऑफ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इज कि बाहर मुल्क में महंगाई हो रही है, एंड बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट फॉरेन गुड फॉर रॉ मटेरियल पर्पसेस, तो जब मैंने उसको यहाँ मंगाया तो मेरी इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन आ गई उसकी वजह से. दैट इज व्हेन यू यूज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, अदरवाइज डोंट यूज दैट. ठीक है. You can talk about uneven distribution of income that it will do, लेकिन again you got to clarify economic growth से तो वैसे तो हर किसी का livelihood improve होना चाहिए, but if you're connecting के unequal distribution of income है, तो that means तो हमारी economy जो है already एक तरीके से unfair तरीके से operate कर रही है. It does not believe in inclusive economic growth. इसके अंदर हैव जो है, जो पैसा वाला है उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, और जो पैसे वाला नहीं है, जो नौकरी कर रहा है, उसको वही सैलरी मिल रही है, कोई खास फर्क नहीं आ रहा. All right, so there's plenty of things to write in this. Clearly, by your suggestions, I can see that. But the question is कि भाई outweigh करता है क्या? Benefits always outweighs the cost. No, it does not. Benefits will not always. ठीक है. So what I would suggest over here that you do is कि अगर एक कंट्री है जो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स के ऊपर है, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, और ख़ास तौर पे हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, जहाँ पर वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं वो आउटवे करेंगे कॉस्ट को. बिकॉज राइट नाउ जो मैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज और डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर की बात कर रहा हूँ, तो ये वही सिचुएशन है कि जहाँ पे इतनी हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, ना रिसोर्स यूज हो रहा है, ना लेबर इस्तेमाल हो रहा है, तो पोल्यूशन भी कोई खास हो नहीं रही. वहां पे अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, तो ये जो हमने ऊपर सारे एडवांटेजेस बताए हैं वो सब आउटवे करते हैं कॉस्ट को. क्योंकि क्या होगा, हाँ थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ेगी, थोड़ी सी पोल्यूशन होगी, रिसोर्सेज थोड़े से डिप्लीट होना शुरू हो जाएंगे, लेबर थोड़ी सी एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगी, लेकिन जो एडवांटेज तुमको मिल रहा है वो तो देखो ना. अब दिस इज वन ऑफ दोज. नाउ आई एम नॉट
in any way promoting this idea, but this has been discussed in the past कि ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स गरीब मुल्कों में जाती हैं और वहां जाके एक्सप्लॉइट करती हैं उनको, उनके रिसोर्सेज को, उनके पानी को, उनके लेबर को, चीप लेबर को, इन सब चीज़ों को, और इट टेक्स एडवांटेज और फिर पोल्यूशन भी करती है। बट देन इन कॉन्ट्रास्ट द आर्ग्यूमेंट इज कि अगर आपके पास वो नहीं है, मल्टीनेशनल नहीं आती है, तो लोगों के पास जो इनकम जनरेट हो रही है अब वो भी नहीं होगी, लोगों के पास हार्डली खाने पीने को होगा। So there's a counter narrative over here which is also there, and we would like you to have that discussion definitely. Right. Economic growth relates to shift of LRAS, not necessarily potential। अगर right पे shift हो रहा है तो that is LRAS। लेकिन अगर AD इंक्रीज पे चला जाता है और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो वो एक्चुअल है, that has nothing to do with LRAS, right? And I started off my question with that. The previous one? No, this one only. तो इवैल्यूएशन के अंदर आई जस्ट वांट टू हैव अ डिस्कशन वेदर इट विल ऑलवेज। फिर दूसरी तरफ इसका जो फिर मैं आर्ग्यूमेंट रखूंगा कि अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, रिसोर्सेज फुली मैक्स आउट हो रहे हैं, हम मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेबर मैक्सिमम काम कर रहा है, अब अगर तुम यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आते हो तो सीम्स लाइक देयर इज मोर इन्फ्लेशन, राइट, मोर एक्सप्लॉयटेशन दैट माइट कम इन, और खास कोई इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट में कोई खास इंक्रीज आ नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आई फील दैट द बेनिफिट्स आर लेस एंड द कॉस्ट माइट बी मोर। तुम अपने एंड से किसी तरीके से और जैसे इस बात को आर्ग्यू करना चाहते हो तुम करो, बट व्हाट इज AO3 एंड योर डिस्कशन फॉर 3 इन कंक्लूजन आखिर में जरूर देना। Discuss whether the benefits of economic growth always outweigh. Do you understand? Always out. It will not always outweigh, is what my answer is about. ठीक है जी। तो अगेन इसको देख के लग रहा है कि मुझे 3-4 क्लास और लेनी पड़ जाएंगी अगर मैं इसी पेज पे चला तो, बट यू नो चलो करते हैं फिर भी। That's 3A, sorry. Let me take out 3B as well. Right. So this question, explain how the CPI is constructed and consider how useful it is as a measure of inflation. एक second, or let me just read it. Right. Explain how the consumer price index is constructed. 3 मार्क है, जल्दी जल्दी से करोगे, ठीक है? फिर it's useful, it's not useful, that is your AO3, जल्दी जल्दी से उसको करोगे, and then your final evaluation कि under what circumstances it will not be useful। आ जाए जी, जरा देख लें। पहले के अंदर तो तुमने क्या करना है, यू हैव टू राइट अबाउट, बल्कि एक सेकंड, इन्फ्लेशन का वर्ड CPI है, तो 2-3 वर्ड्स को डिफाइन कर लो। नंबर 1, inflation, it is a persistent rise in the general price level, and CPI is consumer price index and it is a measure of inflation। हम मैं थोड़ा सा फैंसी वर्ड्स यूज करता हूँ, it's a statistical method to calculate inflation, या it is a weighted average method to calculate inflation, right? फिर उसके बाद you're going to move into, very quickly you're going to move towards the steps to measure CPI. I can't go into the steps right now, but let me just very quickly tell you the steps. You take a sample population, you take a basket of goods and services, which is generally used in the economy. You collect data of consumers purchasing these goods and services and note down their expenditures. You decide a base year, जिसकी value हमेशा 100 होती है, it should be a normal year। फिर उसके बाद आप वेट्स निकालते हो,
फॉर ईच गुड ईच कैटेगरी। यूजली ग्लोबल स्टैंडर्ड है, आप 12 कैटेगरीज पे काम करते हो, एंड आई शोड यू पाकिस्तान का पूरा लेक्चर जाके देखो, उसके अंदर आई मस्ट हैव डिस्कस्ड इट। ठीक है, सो वो 12 कैटेगरीज, और तुम्हारी जब केस स्टडीज आती है ना इसके ऊपर, अगर पास कोई केस स्टडी करोगे ड्राइव में इन्फ्लेशन रिलेटेड, तो यू गोना नोटिस उसके अंदर वही 12 कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर बात हो रही है: फूड, ट्रांसपोर्ट, लाइटिंग, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल, मिसलिनियस एंड सो ऑन सो फोर्थ। कुछ 12 कैटेगरीज हैं। बट द पॉइंट इज कि फिर आखिरी में तुम इंडेक्स निकालते हो, और फिर तुम उस इंडेक्स को कंपेयर करते हो अपने बेस ईयर के साथ टू मेजर ईयरली इन्फ्लेशन। ये स्टेप्स हैं। ऐसे ऐसे करके 2 मिनट के अंदर वो सारे अपने स्टेप्स जो तुमने याद किए हुए होंगे, उसको यू लिस्ट देम डाउन। ना, जहां तक यूजफुलनेस की बात है, कंसिडर हाउ यूजफुल इट इज एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। Number one, you got to figure out who is using it, useful or not useful। तो भाई, गवर्नमेंट यूज करती है। क्यों यूज करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट यूज करती है नेशनल मिनिमम वेज को सेट करने के लिए। गवर्नमेंट यूज करती है टैक्स एंड सब्सिडीज के डिसीजन के अंदर। कि महंगाई हो रही है, ज्यादा महंगाई हो रही है, सब्सिडी देनी चाहिए ताकि प्राइसेस गिरें, स्टफ लाइक दैट। लेबर यूज करती है। लेबर क्यों यूज करती है? वेज निगोशिएशन के अंदर। सिर्फ लेबर नहीं, इनफैक्ट तुम्हारा ट्रेड यूनियन भी यूज करती है वेजेस के लिए। ठीक है। फिर उसके अलावा कंज्यूमर्स भी यूज करते हैं सीपीआई के डेटा को। कंज्यूमर्स कैसे? कि अगर प्राइस बढ़ रही है तो देयर परचेजिंग स्ट्रेटजी डिपेंड्स ऑन इट। पेरिशेबल गुड है तो सेविंग करो। परचेजिंग स्ट्रैटेजी फॉर ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। फॉर एग्जाम्पल, आई स्पोकन अबाउट दिस। महंगाई आने ही है, इन्फ्लेशन है और होगी। गाड़ी आज ही खरीदो, महंगी होगी तो बाद में हमारे पैसे फजूल में खर्च नहीं होंगे। लेकिन आटा दाल चावल तो नहीं कर सकते, सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी। और कौन यूज करता है? फॉरेनर यूज करता है फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी गुड्स बहुत महंगे हो जाएंगे। यू नो अच्छा नहीं है। लेट्स नॉट यूज इट। फिर प्रॉब्लम्स के अंदर इट्स नॉट यूजफुल, इट्स एन एवरेज, इट इज स्टेटिस्टिकल, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड, it's a complicated method and can have errors, राइट? बिल्कुल एरर्स हो सकते हैं, क्यों नहीं एरर्स हो सकते? इसके अंदर डेटा कलेक्शन के अंदर जहां पे स्टेटिस्टिक्स आ जाती है, वहां स्टैंडर्ड डिविएशन क्रिएट हो सकती है। सो फ्रॉम नॉट यूजफुलनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट कैन बी लाइक दिस। जस्ट अ कपल, आई जस्ट वांट टू क्वालिफाई फॉर AO2 के अंदर के मैंने काउंटर आर्ग्यूमेंट किए। वैसे ही 3 मार्क हैं। अगर तुम सिर्फ यूजफुलनेस भी लिखते हो ना, तो 2 मार्क मिल जाते हैं तुमको। ये लिखने की वजह से तुमको 1 मार्क और ऐड हो जाता है, दैट यू नो व्हाट, यू हैव मेड सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। ठीक है जी। फिर मैं कहता हूँ कि भाई, हाउ लाइकली इट इज दैट इट इज, हाउ यूजफुल इट इज एज अ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। मेरी नज़र के अंदर, फ्रॉम माई इवेल्युएशन पॉइंट ऑफ व्यू, this is the best possible method that we have to measure inflation, because the thing is, अगर मेरे को महंगाई नोट डाउन करनी ही है तो देर इज नो अदर मेथड। ठीक है। ये एटलीस्ट एक एवरेज आउट कर लेता है, एक सिचुएशन आपको बता देता है। बिकॉज रिमेंबर व्हेन वी स्पोक अबाउट कि एक दो नेबर्स हैं, दो नेबर्स अगर डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, तो दोनों आर नॉट गोइंग टू गेट हिट बाय द सेम काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है।
Plus, now I want to, मेरी यूजफुलनेस के अंदर what I want to say is कि जो बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ये जो मेरा स्टेप मैंने ऊपर यूज किया है, आई वांट टू रेज सम क्वेश्चंस ऑन दो स्टेप, यू नो like for example, basket of goods and services changes over time. ठीक है, तो जब तुम इन्फ्लेशन निकाल रहे हो, नए प्रोडक्ट्स एंटर हो रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो ऑब्सलीट हो रहे हैं वो निकल रहे हैं, तो मसला ये है कि सीपीआई इज नॉट एबल टू फैक्टर दैट इंफॉर्मेशन प्रॉपरली। ठीक है, फिर उसके अलावा जो आप एक नॉर्मल ईयर का आइडिया ले रहे हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट सम कंट्रीज डू नॉट हैव अ स्टेबल ईयर, तो उसकी वजह से जो उनका सीपीआई के नंबर्स हैं, वो बहुत ज्यादा ऑफ हो सकते हैं बेसिकली टू द रियलिटी। लाइक फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान हैज गॉन थ्रू लास्ट कपल ऑफ इयर्स जिसके अंदर इशू है, तो in that way I would say कि कुछ छोटी मोटी inaccuracy, again it's just a 2 mark thing, I don't want to make a big deal out of it, I can suggest anything which has to do with, yes, these steps को जहाँ पे मैं pick and point करके मैं कह सकता हूँ कि, but I personally feel my conclusion for this is that overall, um, it's the closest, it's the closest method we have to include the entire population। देखो, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इतना डिफरेंट है कि हमारे किसी भी चीज में, रिलीजन से लेके तुम कहीं पे भी चले जाओ, देयर सो मच डिफरेंसेस इन एवरीथिंग, लैंग्वेज एंड कलर एंड लुक्स, एथनिसिटी, हर चीज में फर्क है। गुड्स कंज्यूम करने के गुड्स टाइप में इतना डिफरेंसेस है, तो ये, दिस इज द क्लोजेस्ट यू कैन गेट टू इट, आई फील। ओके, discuss the view that inflation is always a major problem for an economy. Always a major problem. इवैल्यूएशन तो पता होगी तुम्हारी, मुझे लग रहा है तुम्हारी इवैल्यूएशन ज्यादा अच्छी हो जाएगी। पीपी मैं बार बार परचेजिंग पावर के लिए यूज कर रहा हूँ। इन्फ्लेशन के सबसे पहले तुमने AO1 AO2 के लिए इन्फ्लेशन की दोनों साइड्स की बात करनी है कि इन्फ्लेशन इज अ प्रॉब्लम एंड इन्फ्लेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुमको रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, यू शुड बी इंस्टेंटली, यू रीड दिस, अच्छा जी, प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन पे बात करनी है। अच्छा, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी कि इज इट अ मेजर प्रॉब्लम, आई एम नॉट गोना गो इनटू the degree of inflation. That is my evaluation later on stage and all of that. What I want to talk about right now is कि इन्फ्लेशन की यूजली प्रॉब्लम्स क्या है। हम बड़े जेनेरिक से कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। डोमेस्टिक की बात करो तो हम मेन्यू कॉस्ट की बात करते हैं। हम, क्या था वो, शू लेदर कॉस्ट की बात करते हैं। शू लेदर कॉस्ट की बात करते हैं। हम बात करते हैं किस तरीके से borrowers and lenders gets affected। हम बात करते हैं किस तरीके से स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड पीपल गेट अफेक्टेड। ये सारे मैं अभी तक डोमेस्टिक, आई हैवंट ब्रोक, आई एम जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन कि किसी और कभी ऐसे के अंदर अगर वो बात करें तो फिर सेपरेट करने के लिए। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट गोज अप, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट गोज डाउन। इन्फ्लेशन की वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन गो डाउन। ठीक है,
Inflation will cause price of imports to, यार, when I say this ना, the last thing I want to do is, बात यह है कि import की relative price, import की प्राइस नहीं गिर रही है, लेकिन जब आप कंपेयर करते हो तो relative प्राइस फॉल कर रही है, जिसकी वजह से import में इंक्रीज आएगा, जिसकी वजह से करंट अकाउंट जो है वो वर्सन होगा, जिसकी वजह से जो है करेंसी वीक होगी, जिसकी वजह से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब मैं प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज़्यादा इन्फ्लेशन, कम इन्फ्लेशन, दैट इज माई इवेल्युएशन। इन्फ्लेशन के फायदे कुछ बता सकते हो? देखें जी, समटाइम्स इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इन्फ्लेशन इज कमिंग बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ राइज कर रही है और इन्फ्लेशन अगर आ रही है स्टेबल, या डेफिनेटली, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आ रही है और प्राइसेस ऊपर जा, सॉरी, इन्फ्लेशन हो रही है वो फ्रॉम द एग्रीगेट डिमांड वाली साइड से, so that's not bad because employment is also being generated at an expense of little bit of inflation। क्या ही बुरा है, you can talk about that। उसके अलावा अगर स्टेबल इन्फ्लेशन है, तो देखो, स्टेबल